Hey everybody, welcome online to the vocab session today. In the last video that was yesterday, I discussed some of the very important tips regarding how you can learn English passively. If you haven't watched the video, you can search in the playlist and find it. That is very useful for your English preparation. आज के session में we will be discussing 5 words which are trending and with high frequency. So make sure that you are understanding the word to its extent जब तक कि समझ में ना आ जाए. कभी कभी क्या होता है, हमने थोड़ा सा समझा और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं. No, do not do that. Just try to understand the word first. See how it is utilized in a sentence, and after that check with its synonym and antonym as well. In that process, you are learning at not one word but at least 5 to 6 words. Let me tell you how. Let us start today's session. The first word is efficacious. है ना? Efficacy, efficacious. What do you mean by this word? First, try to understand. The word is adjective, so it means it will modify a noun or a pronoun, right? So having the power to produce a desired effect. समझ नहीं आता है कभी कभी हमें. Let's say effective समझ में आ गया, but this synonymous idea कभी कभी आपको डिक्शनरी से नहीं समझ में आता. So what should you do at that moment? You should look for a sentence for this particular sentence, for the particular word. Let's see the first example. It says yoga is very efficacious at reducing stress. So now you can relate, okay, effective is a synonymous idea for efficacious, right? So anytime when you're using effective, you can use efficacious. The next example is because my medicine is efficacious, मेरा जो मेडिसिन है बहुत ही इफेक्टिव है, आई एक्सपेक्ट टू फील बेटर सून, बहुत ही जल्द मैं ठीक हो जाऊंगा. ऑलराइट, सो क्या समझा आपने? जस्ट टेक अ वर्ड, गो थ्रू इट्स डेफिनेशन, बट डू नॉट स्टॉप देयर. You do not have to mug up a word. You have to understand how it is utilized. Then only you will be able to be good at reading comprehension section. The antonyms, the synonyms are successful and constructive, and the antonym are inefficacious and inefficient. I hope आपको ये शब्द efficacious समझ में आ गया हो. मैंने इस वर्ड को इतनी बार बोला है कि वो मेरे जहन में आ गया. समझ रहे हो? Means I want you to repeat a word as many times as you can so that it can be at the tip of your tongue. तभी वो अचानक से आपके मुंह से निकलेगा when you are speaking. क्योंकि वर्ड्स को इंटेंशनली बोला जाता है, ईदर इट गोज टू योर सबकॉन्शियस माइंड, ताकि आप ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स फ्लो के साथ आपके जुबान से निकले. ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज कन्फर. कन्फर के 2 मतलब होते हैं. पहला, टू गिव अथॉरिटी, राइट, ऑनर और ग्रांट समथिंग, राइट. The second meaning of this word is to discuss or consult together. So confer as a verb, इसके 2 meaning होते हैं. Let us see the example of all the both the meanings. The first example is the minister exceeded the powers conferred on him by parliament. So अभी आपको क्या लगता है कि confer यहाँ पे कौन सी meaning को बता रहा है, ये और ये? So when you analyze the sentence, you will find, okay, confer means यहाँ पर give authority, मतलब कि मिनिस्टर को जो अथॉरिटी पार्लियामेंट ने दे रखी थी, उन्होंने उससे बाहर जाकर काम करा, एक्सीड करा. ठीक है. The next example is the principal closed his office door so he could confer in private with the troubled teen. मतलब कोई बच्चा है जो बहुत ही परेशान है, मे बी परेशान है और या परेशानी कॉज करता है. So sometimes like you need to talk with people and they share with you things they do not want to share openly with other people. So that is the reason the principal, being a mentor, he closed the door and to discuss. So you can see that the confer meaning here is to discuss. So in that way you understand both the meaning of confer. And now see the examples. The synonyms, give out to and consult. Give out to means the authority that has been given out to, and the consult is discuss. Okay, and the antonyms are synonym, remove and withhold. किसी चीज को रोकना. The third word in the list is implicit. अब देखो एक शब्द है implicit. तो implicit का जो
एंटोनिम है दैट इज एक्सप्लिसिट। तो आपको यहाँ पे दो वर्ड्स तुरंत पता चल गया। अभी इम्प्लिसिट का मतलब होता है विच इज़ नॉट क्लियर, जो कि क्लियर नहीं हो। ऑन दी अदर हैंड एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर। सो आपके चार शब्द हो गए यहाँ पे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। अंडरस्टूड तो नॉट क्लियर डायरेक्टली stated। implied, कोई भी चीज जब implied हो, let's say there is a question on in a reading comprehension, it says why do you think this protagonist took this action, okay, so why wants you to go to the the crux of the passage to understand the whole idea that has been discussed in this passage and then answer the question। they are implied, they are implicit, वो उसमें निहित है, ठीक है। तो वो आपको एक बार में पढ़ने से, दो बार में पढ़ने से समझ आता है। सो मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग एन आर्टिकल वंस, ट्वाइस, थ्राइस इफ यू आर नॉट गुड एट इंग्लिश। इफ यू आर गुड एट इंग्लिश, एक बार की थरो रीडिंग इज सफिशिएंट। नाउ अंडरस्टैंड दिस वर्ड इम्प्लिसिट विद सम एग्जांपल। हर वर्ड्स कंटेन एन इम्प्लिसिट थ्रेट, मतलब उसने बोला कुछ था लेकिन उसमें एक निहित, एक अंतर्निहित धमकी था, ठीक है। सो हर वर्ड्स कंटेन एन इम्प्लिसिट थ्रेट, मतलब जो क्लियर नहीं है, क्लियरली नहीं है लेकिन इम्प्लाइड है, मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेस देख लेना। तो ये एक क्या है, थ्रेट है। नाउ द हैंडशेक बिटवीन टू मेन वाज देयर इम्प्लिसिट एग्रीमेंट। तो उनका एक इम्प्लाइड अग्रीमेंट था कि हाँ मैं अग्री कर रहा हूँ सारे टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो बी वेरी वेरी clear about these two words, implicit and explicit। implicit means which is implied, not clear. On the other hand, explicit means very very clear, okay। so the synonyms are indirect or inferred and the antonyms are explicit and clear। the next word in the list is very very important, it means very very important as well, right। so indispensable, कोई चीज indispensable मतलब उसके बिना गुजारा नहीं हो सकता। let's say you are preparing for CLAT और आप न्यूज़पेपर की रीडिंग अपनी स्पीड रीडिंग को बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे हो, so that will not be applicable। आपको the reading is indispensable when you are preparing for CLAT, seeing the current scenario of passage based questions, right। so absolutely necessary, something which is absolutely necessary is indispensable। Now see the examples, cars have become an indispensable part of our lives। समझ सकते हो, when you have a family, you need to go somewhere, you need to have a car too, so it is kind of indispensable। next one is she made herself indispensable to the department, means she refers to maybe a professor or an employee or somebody जिसने अपने आप को अपने काम के द्वारा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लिया है कि उसके बिना डिपार्टमेंट में इशू हो सकता है, मतलब दिक्कत आ सकती है, हिंड्रेंस आ सकता है। सो शी मेड हरसेल्फ indispensable to the department। the synonyms are crucial and essential and the antonyms are dispensable and superfluous। superfluous का मतलब होता है unnecessary, ऑलराइट। सो देखो आपने indispensable पढ़ा, आपने एक दूसरा synonymous idea लिया, आपको दो मीनिंग तैयार हो गई, प्लस आप synonym देख रहे, crucial, essential, दो यहाँ पे हो गए, 4, एंड देन antonyms आपने दो और देखे तो 6। सो व्हाट डू यू थिंक, अगर आप इतने एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका मेमोरी बहुत ही पावरफुल होता है। व्हेन यू एक्सरसाइज इट गोज टू योर माइंड एंड देन इट गोज टू योर, फर्स्ट इट गोज टू योर you know the permanent like it acts like ROM and RAM, आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है जब आप कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो, बट एक दो बार तीन बार पढ़ने के बाद वो आपके परमानेंट मेमोरी में भी जाती है। एंड द थिंग इज यू हैव टू टेक थिंग्स टू योर परमानेंट मेमोरी एंड इट विल हैपन व्हेन यू प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। द लास्ट वर्ड इन द लिस्ट इज ऑगमेंट। बहुत ही प्यारा शब्द है और ध्यान से देखो, ये नाउन जैसा दिखता है क्योंकि MENT लगा हुआ है, लेकिन ये एक वर्ब है। दिस इज वेरी वेरी दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। सो टू इंक्रीज द साइज और अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में वृद्धि करना, किसी बढ़ाना किसी चीज़ को, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स आर बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑगमेंट माई इनकम, ठीक है। देखो देखने से थोड़ा सा अनयूजुअल सेंटेंस लगता है, आई वॉन्ट टू ऑगमेंट, सो एक बार लगेगा कि ओके ऑगमेंट कहीं एक तो नाउन तो नहीं है। So because I want to augment in my salary, I am thinking about getting a second job। क्योंकि ये पर्सन जो है वो अपनी सैलरी में वृद्धि चाहता है तो वो दूसरी जॉब में जाना चाहता है। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ यू ऑगमेंट द इमेज, अगर आप किसी इमेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो द पीपल इन द फोटो विल अपीयर ब्लरी। मान लीजिए किसी इमेज का पिक्सल कम है और आप उसे ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, बढ़ाते हो, ऑगमेंट करते हो तो वो ब्लर हो जाता है,
Okay, so synonyms are add to and supplement and the antonyms are decrease or compress. So I guess augment आपके लिए बहुत ही आसान शब्द हो गया होगा आपकी. Augment means increase. So obviously बात है इसकी जो antonym होगी that will be decrease, है ना. So let us recall what words we studied now. We first word in the list was efficacious, means that is effective. Confer means to grant or to discuss. There are two meanings. And implicit means something which is implied, not clearly stated. Indispensable means absolutely necessary, something which is absolutely necessary. And augment means to increase. So I guess you understood all these words. I hope you follow us on various platforms. If you haven't done it, do subscribe to our YouTube channel, wherein you get a lot of informative videos on law, GK, English, maths and reasoning, which will be very helpful and indispensable in your CLAT preparation, right? And you can also join our Telegram channel for regular updates on various passages, practice solving, updates on law, current news. You can also join our social media platforms, Facebook and Instagram, for regular updates on law. So thank you so much for watching the video till the end. Stay tuned, stay happy. Thank you.